Hello, warrior. Welcome back. In last module, we unlocked the secret to break the negative thoughts and fear by rewiring techniques. And now we entered the real game changer, the mindset. Because strategies will take you forward, but the mindset will decide how far you go. This module is the transformation module for you, not just as a student, but as a peak performer. Module 3, activate the topper's mindset. We are going to know all the techniques which the toppers follow to supercharge their studies. Now, let's understand what exactly is टॉपर्स माइंडसेट. वो कैसा सोचते हैं, कैसे उनके हैबिट्स होते हैं, वो कैसा फील करते हैं एंड वो कैसे सक्सेसफुल होते हैं by doing one simple thing. They think, feel, act like successful before the exams as well. एग्जाम देने से पहले ही उन्हें पता होता है कि वो पास होने के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं. उनमें उतना कॉन्फिडेंस होता है, उतना डेडिकेशन होता है, उतना कंसिस्टेंसी होता है, उतना स्मार्ट वर्क होता है, उतना पावर होता है, उतना डिसिप्लिन होता है. एंड अबाउट दैट, उनका माइंडसेट पॉजिटिव माइंडसेट होता है, which includes believing in their own capability, staying focused under pressure, managing distractions, thinking long term and not really short term, turning stress into energy. डर लग रहा है, होगा या नहीं होगा, मुझे करना होगा मेरे घर वालों के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए. उस स्ट्रेस को उन्हें एक पावरफुल एनर्जी में कन्वर्ट करने का एक एक तरीका आता है उन्हें. That is nothing but the topper's mindset. Are you ready to prepare your mindset as a topper's mindset? Yes, absolutely. That's why you are here, and that's why we are here. Because your marks don't create your mindset, but your mindset creates your marks. And you are going to be the next topper. सबसे पहले एक मिथ को बर्स्ट करते हैं. Toppers are not born, they are built. They are built by step process, by putting their sweat, by putting their efforts, by putting their consistency, and by putting their discipline. जितने भी टॉपर्स को आप एडमायर करते हो, जितने भी AIRs को आप एडमायर करते हो, they are not born super smart. They have simply built the strong, most powerful habits and the most powerful and respected self image. They have trained their mind to avoid panic, they used visualizations, they used positive affirmations, and they stayed in control even during failure. अगर फेलियर के वक्त रोने में उन्होंने वक्त बर्बाद कर दिया होता, तो क्या आज वो चॉपर होते? किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की आप हिस्ट्री जान के देख लो, मे बी इट एनी फील्ड, कोई भी फील्ड में खोल के देख लो, जो जितना ज्यादा सक्सेसफुल है उससे कई ज्यादा बार वो फेल हुआ है. एंड उसी फेलियर को ओवरकम करने के बाद, स्ट्रांगली उसको बाउंस बैक देने के बाद वो सक्सेसफुल बना है. गूगल एनी सक्सेसफुल पर्सन नाउ and you can check the biography of that particular person. May it be Akshay Kumar, may it be Virat Kohli, may it be any damn person. So it's all about how you handle yourself in your failure is the most biggest thing. टॉपर्स नॉर्मली अपने आप को कैसे वर्ड से बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम they never expect, they never regret, they never say that I hope I can do. वो कभी भी डाइसी नहीं होते हैं. They always crave for the opportunities, they never give excuses.
अगर वो एक्सक्यूज दे रहे होते, अगर वो रीजंस दे रहे होते अपने लाइफ में, तो वो आज टॉपर नहीं होते। दे नेवर से शायद ये हो पाएगा या नहीं, पर फिर भी मैं ट्राई कर लेती हूँ। आई होप दिस कम्स आउट ट्रू, आई विश फॉर दिस, ये ऐसा मैं कर लेती। यू नो, आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है। दे नेवर से दीज थिंग्स टू themselves. They always look out for the opportunities, and they can say, I can figure this out. We can work on this. I think I'm doing better than before. I'm improving right now. And maybe, yeah, I'm working on this, and I think my focus is improving. They pep talk themselves, and they avoid all the kind of excuses. And ultimately, जैसे कि मैंने बोला, your words become your thoughts, and your thoughts become your energy, and that energy stored in your subconscious mind, and that subconscious mind will make you topper. Build a topper identity by doing a self talk practice. बातें करो अपने आप से, पूछो अपने आप से कि आज मैंने क्या किया दिन भर में, आज मेरा क्या टारगेट है, क्या आज मैंने अच्छे से पढ़ाई की, क्या आज मैंने अपने गोल को अचीव किया, आज मैंने दिन भर में कितना टाइम पास किया, आज मैंने दिन भर में कितना हार्ड वर्क किया, आज मैंने दिन भर में क्या ऐसी चीज की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। Am I proud of whatever I am doing? Ask these few yet powerful questions to yourself, which will make you responsible for taking each tiny step, for each tiny minute. And after being responsible for spending your 1 minute of your even whole day, will make you think on that, and will make you to avoid to do the unwanted things which are not just required to do. आज ही एक पेज पे आई एम अ चॉपर इन द मेकिंग का एक सेंटेंस लिखवाएं, चिपका दो अपने स्टडी डेस्क पे, एंड फिर देखना कि आपको वो टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बिकॉज डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप, मिनट बाय मिनट, you are becoming responsible for your decisions, for your work, by asking yourself every night. And most important thing, अगर कुछ गलती हो भी गई, never be harsh on yourself. Say yourself, it's okay, I'm going to improve this, I forgive myself, and I'm going to do a fresh start. Because अगर आप अपने आप पे harsh हुए ना, there is no one else to push you. You are the only person who can push yourself to the edge, to the uncomfort zone of yours. So never be harsh on yourself. Now, let's talk about few, mental rituals जो कि, हर person करता है, जिसके हर successful person करता है. Start your day like a topper. जैसे शाहरुख खान हमेशा बोलते हैं, वो जैसे ही सुबह उठते हैं ना, वो सबसे पहले एक सेंटेंस बोलते हैं, I am the best. And that one sentence boosts up his energy like anything, and now we can see where he stands. In that way, start your day like a topper, like every morning. Make up your own affirmation list and speak those affirmations every day for 2 minutes. After speaking those affirmations, visualize yourself into that, feel that thing, and also try to maintain a journal. बोलो अफर्मेशंस को, लिखो उन अफर्मेशंस को, एंड विजुअलाइज करो अपने आप को। अगर आप डेली 10 मिनट ये चीज करते हो, तो अगले 5 दिन में, 7 दिन में, you are going to convert from a negative soul, from a distracted soul, to a focused, concentrated, elegant, successful, powerful, and the strongest soul. So do this morning mental ritual. Start your day with the affirmation, guys. Just close your eyes, fold your hands, say that I'm grateful, speak those affirmations, visualize it, and start your day. Next,
प्री स्टडी फोकस रूटीन, अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं। तो आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, जी जस्ट एक्टिवेट योर ब्रेन सिर्फ 2 मिनट में, बिफोर एवरी स्टडी सेशन जस्ट से टू योर सेल्फ, अभी मैं जो भी पढ़ाई करने वाला हूँ वो बहुत अच्छे से होने वाली है। आई एम into my 100% focus zone. I am happy, I am energetic, I am enthusiastic for whatever I am learning, and I am very, very much excited for my results. Because मैं अभी मेरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू परफॉर्म माई बेस्ट। ये जो भी अगर आप प्री स्टडी फोकस, अगर आप ये रूटीन बिल्डअप करोगे, यू आर गोइंग टू टेल योर ब्रेन that yes, the study mode is on, and your brain, your consciously, subconsciously is going to support you. Then, evening reset ritual. Okay, whatever happened in the whole day, think about it, write it down somewhere, journalize it. Maybe you can even speak with someone else. Okay, just pour your heart out. Stop overthinking. If you're having any kind of guilt, any kind of regrets, just as I said, don't be harsh on yourself. Just say to yourself, it's okay. Tomorrow I'm going to start it afresh and I'm not going to repeat these mistakes. I have learned something out of it, and tomorrow I'm going to perform really well. And if possible नहीं, आपको ये करना ही है that no phone before 30 minutes of sleeping, because it might distract you and it might distract your sleep as well. Final challenge, आपको अब ये पता चल गया है कि टॉपर्स का माइंडसेट क्या होता है। वो पहले से ही ऐसा फील करते हैं जैसे कि वो सक्सेसफुल है और वो पास होने के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं। वो अपने ब्रेन को कॉशियसली, सबकॉशियस तरीके से, पूरी तरीके से emotionally, thoughtfully, they have developed a kind of brain which is giving them a boost kind of thing by performing morning rituals, visualization techniques, affirmations, pre study focus routine, also the evening routine. And now take this 7-day challenge for you in which you are going to follow these morning rituals. You are going to do affirmations daily. You are going to visualize your success. You are going to study really well, and you can just cut it short in 3 focused pomodoros daily. Pomodoros is nothing but uh, give a type of a focused session, take amount of few break. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1.5 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई कर रहे हो तो 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले लो और फिर उसके बाद में पढ़ाई करने बैठो। Prepare a schedule in chunks and study accordingly. Okay, then reflect every night का सेशन फॉलो करो and track your energy and effort and say I am a topper 5 times a day. Make it your daily habit, guys, and no one can stop you. No one can stop you from being the topper. Make this just a habit of yourself. अब आप सब कुछ जान चुके हो, आपके पास क्या पावर अवेलेबल है, कॉशियसली, सबकॉन्शियसली आपके नेगेटिव बिलीफ को कैसे रिवायर करना है, उसके अलावा टॉपर का माइंडसेट क्या होता है, टॉपर्स क्या डेली टेक्निक्स को फॉलो करते हैं एंड वो कितनी पावरफुल होती है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है that you are going to take this 7-day challenge. You are going to send me a pic of your 7-day challenge and you are going to give me the conclusion, what changes you are feeling into your life and how your life has changed completely. Use this every day, and I promise you, your focus, your concentration, your results, your way of thinking, your mindset, your speed will never be like before. Your energy will never be like before. You will start feeling happy. You will start feeling grateful because success is not luck. It's a system, and you have got the system now, and your results is gonna prove it. If you have any kinds of doubt during the whole workshop, you can just DM me. If you are still confused regarding anything, you can take one-on-one mentorship session with me through my app Peak Prep.
And you can stay connected with me. You can subscribe my channel on Instagram. You can follow me on YouTube, like Instagram, as well as my Telegram channel, in which I usually send like free study updates and free study tips. We have not just learned how to study, we have learned how to train our mind with beautiful techniques and the most powerful techniques. And I expect that you get benefited like hell from these workshop, and you just step the success zone very soon. All the very best, and bye bye.